Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Faiza. As you know, we are already discussed about how to have a beautiful mind. It's a book written by Edward de Bono. हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ पैरेलल थिंकिंग द सिक्स हैट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यही सवाल आता है कि व्हाट इज़ पैरेलल थिंकिंग. एडवर्ड डी बोनो ने इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी है. According to Edward de Bono, parallel thinking means that at any moment everyone is looking in the same direction. अब मिस्टर एडवर्ड डी बोनो जो है वो कहते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग है उसको इंडिकेट किया उन्होंने 6 कलर्ड हैट्स के साथ. द डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग इज इंडिकेट बाय 6 कलर्ड हैट्स, ईच ऑफ विच इंडिकेट अ मोड ऑफ थिंकिंग. हर हैट जो है वो इंडिकेट करती है मोड ऑफ थिंकिंग को. एट एनी मोमेंट एवरीवन इज वेयरिंग द सेम कलर ऑफ हैट. व्हाट इज मीन बाय पैरेलल थिंकिंग? दैट इज व्हाट इज मीन बाय पैरेलल थिंकिंग. अब मिस्टर एडवर्ड डी बोनो ने जो इस चैप्टर में हैट्स का जिक्र किया है उनमें से हैं ब्लैक हैट, येलो हैट, ग्रीन हैट, ब्लू हैट, रेड हैट एंड वाइट हैट. अब अगर हम हैट्स रैंकिंग की बात करें तो हाई रैंकिंग जो है, जो हाई रैंक है वो है ब्लू हैट का, देन ग्रीन हैट, देन येलो हैट, देन वाइट हैट, देन ब्लैक हैट एंड लास्ट वन इज रेड हैट. सो अगर हम वन बाय वन इन हैट्स की इंडिकेशंस की बात करें तो द वाइट हैट इंडिकेट अ फोकस ऑन इंफॉर्मेशन. ये क्या करती है? फोकस ऑन इंफॉर्मेशन इंडिकेट करती है. व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू वी नीड, और जैसे कि हाउ आर वी गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन वी नीड. अगर हम रेड हैट की बात करें, द रेड हैट गिव फुल परमिशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इमोशंस विदाउट एनी नीड टू गिव द रीजन बिहाइंड द फीलिंग्स. रेड हैट इंडिकेट करती है हमारे पास फीलिंग्स एंड इमोशंस को. द ब्लैक हैट focus on faults, weakness, what might go wrong and why something does not fit. इसको हम सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी नेगेटिविटी को इंडिकेट करती है. सो येलो हैट. With a yellow hat, the focus is on value, benefits and how something can be do. सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि येलो हैट इवेलुएट करती है बेनिफिट्स. अगर हम ग्रीन हैट की बात करें तो ग्रीन हैट सेट असाइड टाइम, स्पेस एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर क्रिएटिव एफर्ट. अंडर द ग्रीन हैट एवरीवन इज expected to make such an effort. Blue hat is to do with the organization of thinking. This means setting up the focus and also putting together the outcomes. सिंपली ब्लू हैट का ये भी कह सकते हैं कि इट इंडिकेट द मैनेजिंग द थिंकिंग. लाइक कंट्रोल हैट, ये कंट्रोल हैट है. सेट द फोकस एंड एजेंडा, समराइजेज एंड कंक्लूड करती है, इंश्योर दैट द रूल्स आर ऑब्जर्व्ड. सो जैसा कि आपको मैंने वन बाय वन तमाम इंडिकेशंस बताई, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग मोड है. तो जो वेयर करेगा, अगर रेड करेगा तो उसके अपने थिंकिंग मोड होंगे, और जो येलो या वाइट हर कोई अलग से सोचेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तसव्वुर या ख्याल. मैं इसकी आपको एक छोटी सी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ. कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज that occur in the mind or in thoughts. कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को जो हमारे माइंड और थॉट्स में क्या करते हैं, जगह लेते हैं. दे आर अंडरस्टूड टू बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स. सो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये आ रहा है कि वाई बोदर विद कॉन्सेप्ट. तसव्वुर से परेशान क्यों? जैसा कि हम किसी भी बात का तसव्वुर करते हैं और बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि अगर ये गलत निकली तो इस तरह की जो है परेशानी लाहक होती है. इस तरह की परेशानी से हमें सामना करना पड़ता है, इसलिए हम परेशानी का बाइस बनते हैं. देन पिक आउट द कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट के लेवल होते हैं. देयर मे बी द बिजनेस कॉन्सेप्ट हो सकता है, देयर आर वैल्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है, एंड देयर आर इंफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट इज.
अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। Concepts are very important part of thinking and a key component of a beautiful mind. ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है ब्यूटीफुल माइंड के लिए। Concepts are important in generating ideas. ये बहुत ज़रूरी है आइडियाज जनरेट करने के लिए एंड डिजाइनिंग वेज फॉरवर्ड वेयर देयर इज नो रूटीन अवेलेबल concepts are essential. Skill in thinking in concept terms only comes with practice. ये हमेशा सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। Part of your mind should be watching, noticing the concept being used by yourself and by others. Part of your mind जो है वो सिर्फ watching और notice करे the concept being used by yourself and by others. इसके अलावा concept are like parents that breed children, जो अपने बच्चों की नस्ल को बढ़ाता है। Concept like parents that breed children and like road junction that open up several other roads. So there are different level of concept from the very broad to the quite specific. In general, the middle layer is the most useful. Concepts are not always complete, but they carry important aspect of what is being done. So here I am going to show a diagram related to this concept. So गोल, अगर हमें कोई गोल अचीव करना है, सबसे पहले उसके लिए एक आइडिया बनाना है, उसके बाद उस आइडिया के ऊपर मतलब उसका कॉन्सेप्ट एंड देन डायरेक्शन। सबसे पहले तो क्या, अ वे ऑफ कंप्लीटिंग द गोल। सबसे पहले क्या कि उस गोल को अचीव करने के लिए एक वे, अ वे ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट करने के लिए गोल को। देन अ जनरल मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, उसी वे के ऊपर चलते हुए एक मेथड, मतलब एक मेथड को करना, उस टास्क को या उस गोल को अचीव करने के लिए एक मेथड, जनरल मेथड। अगर तो वो अ वेरी ब्रॉड अप्रोच, अगर वो काफ़ी बड़ा है, मतलब वसी नुक्ता नज़र है, काफ़ी बड़ा है, तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक और मेथड करेंगे एंड अदर स्पेसिफिक आइडियाज ऑफ पुटिंग द कॉन्सेप्ट टू वर्क, और देन अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी बात को बगैर किसी कॉन्सेप्ट के कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, ऐसे ही कोई भी काम या कोई भी गोल भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे उसका लंबा रास्ता है या चाहे रास्ता छोटा है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के बगैर अचीव नहीं कर सकते। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिव। इसका मतलब है मुतबादिल या दूसरा रास्ता। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रिलेटिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू और मोर पॉसिबिलिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अल्टरनेटिव वेज होते हैं। अगर मतलब किसी भी रास्ता को हमने चुनना है तो या किसी भी काम को करना है तो उसके जो है हमारे पास अल्टरनेटिव वेज होते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। अब कुछ लोग ईजीएस्ट वे अपनाते हैं और कुछ लोग पेचीदा। मंजिल एक होती है लेकिन रास्ते अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम मैथ के सवाल की बात करते हैं तो मैथ के सवाल आंसर एक आता है लेकिन तरीके दो तरह के, मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स। सो लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ ब्यूटीफुल माइंड। ये एक ब्यूटीफुल माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। If we have an adequate way of doing something, does not mean that there might not be much better way. If we try, we can find the better way. अगर हम adequate way पे मतलब कुछ कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है इससे बेटर वे कोई भी नहीं है। अगर हम ट्राई करें तो इससे भी बेटर वे मिल सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ फोकस करके, प्रैक्टिस करके हम बेटर वे, उससे भी ज़्यादा बेटर वे पा सकते हैं। So to be choose a new way of doing something must show clear benefits over the existing way, and there can be alternative perceptions or ways of looking at something. These can lead to different judgments or actions. There can be alternative sets of values determined by experiences, culture and personality. Alternatives of action can be generated by finding the operation concept and then seeking other ways of carrying out the concept.
alternatives of perceptions. Perceptions are found by trying out different point of view, creating a different perceptions and seeking to justify it. Alternative values are found by scanning through a range of values or asking questions. So alternative वैल्यू कैसे फाउंड हो सकती है? बाय स्कैनिंग थ्रू अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चन, मतलब फोकस करके उसके ऊपर और क्वेश्चंस वगैरह करके कोई भी गोल भी अगर अचीव करना है हमने, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव वेज होंगे, उसके लिए अल्टरनेटिव वैल्यूज होंगे, उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड्स होंगे। तो अगर हम उसके ऊपर फोकस करें और अगर हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो सबसे बेस्ट हम वे जो है वो अपना सकते हैं। So our next topic is emotions and feelings. Feeling is an emotional reaction that experiencing of affective and emotional states, a mental state that arises spontaneously rather than through conscious effort. So emotion and feelings are a very important part of thinking. Ultimately, choice are based on emotions and feelings. Ultimately हमारी जो choice है वो भी हमारी emotions और feelings पे base करती है. So here we discuss about the resources four reasons why it is important to understand the difference between feelings and emotions. So number one is that feelings are not the same as emotions, that they each play a different role in your reality. Three, that they are very important internal contributing factors that shape and mold your reality, as do other internal and external influences. Fourth one is that they do affect the quality of your life experiences. So यहाँ पे मैं आपको और थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस बता देती हूँ इनमें. Feelings tell us how to live. Emotion tell us what we like and dislike. Feeling state, there is a right and wrong way to be. Emotion state, there are good and bad actions. Feeling state, your emotions matter. Emotion state, the external world matters. Feeling establish our long-term attitude toward reality, and emotions establish our initial attitude toward the reality. So, emotions and feelings are our way of linking our values to the situation. In a very serious discussion, you may want to listen first and ask questions before showing your feelings. In all other cases, there may be a point in expressing your feelings early as this provide useful feedback to the speaker. In a controversy, you should show your true position on one side or the other or above it all. Your revealed position is where you start from and you may shift from it. मतलब कि हमेशा आपका जाहिर करदा मुकाम वही है जहाँ से आपने शुरू किया. You do not have to be for against an idea. You may like the idea under certain condition or with certain modification. You do need to decide whether you are indeed willing to have your mind. You do need to decide. आपको ज़रूरत है decide करने की whether you are indeed willing to have. क्या आप तैयार हैं your mind change, अपने mind को change करने के लिए. अगर कभी भी हमें अपना माइंड चेंज करना है या हमें अपना रिश्ता चेंज करना है तो हमें इमोशंस एंड फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना होगा. उनके दौरान हम कोई भी गलत फैसला भी ले सकते हैं. हम जब भी ऐसा कोई भी स्टेप लेते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि पहले उसके ऊपर सोच विचार करें कि अगर हाँ तो फिर ठीक है. बॉडी और माइंड को जो है वो काम करने दें. यू इमोशंस एंड की वजह से जो है वो बॉडी और माइंड म्यूट हो जाता है. सो सोच समझ के हर फैसला करना चाहिए. इमोशंस एंड फीलिंग को कंट्रोल, एहसास और जज्बात को. So next topic is values. Values is defined as the principle that help you to decide what is right and wrong and how to act in various situations. So values determine what we like or do not like. Value determine your our choices. So हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिटरमाइन करती हैं हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता, और हमारी चॉइसेस को भी डिटरमाइन करती हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़. पर्सनल वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, क्वालिटी एंड इनोवेटिव वैल्यूज़. सो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू क्या होते हैं?
And or any organization has values related to both the purpose of the organization and the running of the organization. क्वालिटी वैल्यूज, हर चीज़ की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, जैसे कि लाइक स्टील शुड बी स्ट्रांग, glass should be clear, restaurant service should be fast and exact. And innovative values, so it is difficult to demand innovation, yet this is what happens with fashion, with gadgets, and with motor cars. The priority of other values will be determined by circumstances. If you are hungry, your value different from when you are not hungry. वैल्यू में हमारे पास इकोलॉजिकल वैल्यू भी आ जाती हैं. देयर आर इकोलॉजिकल वैल्यू विच असेस द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग ऑन द environment in the wide sense and also the narrow sense. So last one is the negative value. The term negative value is used to refer to the negative impact of something. So हर चीज़ की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी कदर कीमत होती है. हर चीज़ को उसकी वैल्यू से ही पहचाना जाता है.